Good morning, student. Let's start. This is a new chapter, permutation. Now, as the previous class, exercise 7.1, complete किए थे हमने. And today, that is the same question in 7.1. Question number 5. A coin is tossed 3 times and their outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? A coin is a one-time toss, then total possible outcome 2, head and tail. So only possible outcome is 2, head and tail. But now, if the coin is tossed 2 times, then total possible outcome is a 2 raised to power 2, that is a 4. And total outcome is 4, then 4 outcome is H, 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 T, T, H, and T. But now a coin is tossed 3 times, then total possible outcome is a 2 raised to power 3, that is 8. Then this is 1 is H, 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 T, H, T, H, H, T, 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 H, H, T, H, T, 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 H, and T, T, T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So now, dear student, this is the question. Okay, now coin is tossed 3 times, right? So total possible outcome is 8, and there are 8 possible outcomes. This is sample space. Now is the question number 6. Given 5 flags of different color, there are 5 flags, but all are different color. 5 flags. Then, how many different signals can be generated? Each signal required to use 2 flags, one below to other. There are 8 फ्लैग में 2 डिफरेंट कलर के फ्लैग से एक नोटेशन एक सिग्नल को शो कर रहे हैं. अगर सबसे पहले अगर हम इस बॉटम को फिल करने के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं, तो दैट मींस ये 5 कलर से फिल होगा. बट नाउ द वन फ्लैग इज फिक्स्ड, राइट? लेफ्ट 4, देन अदर बॉक्सेस को फिल करने के लिए 4, देन 5 into 4, यानी कि हमारे पास में कितने सिग्नल्स हो गए? टोटल 20 सिग्नल. राइट स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन इन एग्जांपल. बट टुडे आज हम आपको बताएंगे कि परम्यूटेशन दैट मींस अरेंजमेंट, राइट? लेकिन एक्सरसाइज 7.1 इज अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज. हमने ऑल क्वेश्चंस बॉक्स मेथड से सॉल्व किए, बट टुडे नाउ परम्यूटेशन को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली. परम्यूटेशन, सपोजली एक एग्जांपल कि 5 स्टूडेंट can arrange how many ways? 5 स्टूडेंट को हम कितने ways से अरेंज कर सकते हैं? So that means this denoted notation, this is factorial 5. This is the notation of factorial. You know student, what is the factorial? Factorial is denoted by this या otherwise book के अंदर ये notation, right? So दोनों notation का factorial, but what is the meaning of factorial? Factorial, that means factorial n, that is n, n minus 1, n minus 2, n minus 3 and so on. This is factorial. For example, कि 5 स्टूडेंट को अरेंज करना है, that means factorial 5. अब factorial 5 को हम डिनोट कैसे करेंगे, सिंपलीफाई कैसे करेंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So what is the value of factorial 5? 5 4 is 20, 23 is 60, 60 is 120. That is the value of factorial 5 is 120. Factorial 4, that means 4, 3, 2, 1. 4 3 is 12, 12 2 is 24. Factorial 3, that is a 3, 2, 1. And value of factorial 3 is a 6. Factorial 2, that is a 2 into 1, that is 2. Factorial 1 is 1, but factorial 0. This is the universal truth. Is a factorial 0 is 1, right? Is a fixed value और किसी भी negative number का factorial हम कभी भी find नहीं कर सकते. So student, what is the factorial? Factorial that means, right? Factorial and that means n minus 1, n minus 2, n minus 3 and so on. Now permutation पढ़ते हैं.
हमें 5 स्टूडेंट को अरेंज करना है एक रो में एक कॉलम में, राइट। तो हमारे पास में दैट इज द रिजल्ट इज अ फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 4 3 2 1 दैट मींस दैट इज अ 120 यानी कि दैट इज द टोटल इज ways 120 ways नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ways कितने तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं 120 तरीके से। लेकिन सेम हमें 5 स्टूडेंट को अरेंज करना है और 5 ही लाइन से तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज अ 5p5 p दैट इज अ परम्यूटेशन दैट इज रियलिटी, राइट। कि अगर आपको 10 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट को एक रो में अरेंज करना है दैट मींस 10p4 टोटल इज 10 नाउ अरेंज इज ओनली 4 स्टूडेंट दैट इज 10p4 बट 10p4 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे p फॉर परम्यूटेशन और परम्यूटेशन का एक फार्मूला होता है npr, right? What is the meaning of npr? That is a factorial n upon factorial n minus r. This is the permutation. For example, कि 10 student में से now 10 student में से only arrange is 4 student. That is 10p4 and 10p4 की value that is factorial 10 upon this is n this is 4 factorial 10 upon factorial 10 minus 4. You know student factorial 10 as it is 10 minus 4 and that is a factorial 6 factorial 10 की value 10 9 8 7 into factorial 6 upon factorial 6 factorial 6 to factorial 6 cancel, right? Then 10 nines are 90 then into 8 that is 720 that is multiplied by 7 5040. So this is permutation. Permutation is denoted by NPR. And what is NPR? That is the factorial n upon factorial n minus r. Right? So 10p4 को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं. For example, कि मेरे पास में 5 स्टूडेंट हैं and now arrange is only 2 students. Right? So that is a 5p2. What is the value of 5p2? What is the formula of NPR? Factorial n upon factorial n minus r. This is the formula of NPR. Right? Where r is between 0 to n. ध्यान रखना आपके सामने यहाँ पर r की वैल्यू between 0 to n. Right? 0 to n possible है r की वैल्यू. So now 0 is not possible. 0 to n. Right? And now find the value of 5p2. That is our king formula. Factorial 5 upon factorial 5 minus 2. Factorial 5 as it is 5 minus 2 is a 3. What is the value of factorial 5? 5, 4, 3, factorial 3. आपको आगे एक्सप्लेन नहीं करना, that is a factorial 3. Then factorial 3 to factorial 3 cancel, that is 20. So now look here student, this is permutation. Permutation that means P is a permutation and the total outcomes are which were arranged करने. So permutation में दो फॉर्मूले, एक है NPR और एक है factorial. फैक्टोरियल में को 5 स्टूडेंट है NPR की वैल्यू में अभी आपको एक बात और क्लियर करूंगा कि NPN सपोज मुझे 10 स्टूडेंट है में से 10 को अरेंज करना है दैट इज NPN. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ NPN? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n minus n. Then factorial n as it is n minus n that is a 0 और factorial 0 की वैल्यू इज ऑलवेज 1. So now look at student कि what is NPN? NPN is equals to factorial n. यानी NPN factorial n की इक्वल होता है. So factorial का मीनिंग factorial n that is n n minus 1 n minus 2 किसी भी factorial की वैल्यू factorial 5 की वैल्यू फाइंड करनी that is a 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is 120. Factorial 4 is 24. Factorial 3 is a 6. Factorial 2 is a 2. Factorial 1 is a 1 but factorial 0 is always 1. किसी भी नेगेटिव फैक्टर की वैल्यू कभी नहीं होती. सो स्टूडेंट कभी भी ध्यान रखना कि आपको कितने आपके पास में 3 डिजिट नंबर है, आपके पास 10 नंबर है, 10 में से आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं. दैट इज there are 10 numbers but now can arrange is only 3 that is 10p3 और 10p3 को आप इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन करो. So student exercise 7.2 is totally depend on formula. It's a very simple exercise. So please solve exercise 7.2, right? And any problem contact WhatsApp number. Thank you.